Good morning everybody. Now in last lecture we have discussed about the series and parallel combination of capacitor. Now today we have discussed about the energy stored in capacitor. So now parallel plate capacitor have two plates, plus Q and minus Q. Now the potential difference between these two is suppose V dash, cross section of given plate is capital A and the separation also small d. Now delta Q dash charge transfer from minus Q to plus Q. Delta Q dash charge transfer from minus Q to plus Q. So now work delta W is equal to V dash delta Q. ये फार्मूला कौन सी? तो W is equal to VQ. W is equal to VQ. So now डेल्टा क्यू डैश चार्ज ट्रांसफर करने के लिए डेल्टा क्यू डैश के लिए जो वर्क होगा डेल्टा W इज इक्वल टू V डैश डेल्टा Q. सो नाउ जीरो टू कैपिटल Q चार्ज स्टोर करने के लिए जीरो टू कैपिटल Q चार्ज स्टोर करने के लिए जो वर्क होगा वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू Q डेल्टा W and therefore work is equal to integration 0 to Q V dash into delta Q, V dash into delta Q, but V dash is equal to so Q dash upon C. C is equal to Q upon V. So electric charge stored in capacitor is Q dash and the potential is V dash. So now V dash equal to Q dash upon, so now work W is equal to integration 0 to Q dash upon C into delta Q. Okay, जब इंटीग्रेशन लिखेंगे सो वर्क 0 टू Q तो इस फॉर्मेट में भी हो सकता है कि Q डैश डिवाइड बाई C इंटू डी क्यू. डेल्टा Q मतलब डी क्यू. Okay, 1 upon C is a constant value. So integration 0 to Q dash into dq dash into क्या लिखें dq dash. सभी जगह डैश रखना पड़ेगा. ओके, क्योंकि Q dash ट्रांसफर फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q. डेल्टा Q dash ट्रांसफर फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q. डैश रखना पड़ेगा. ओके, इंटीग्रेशन की फार्मूला सो एक्स एस टू एन डी एक्स x raised to n plus 1 upon n plus 1 and therefore 1 upon C Q dash square upon 2 0 to Q. So now first upper limit then lower limit. So 1 upon C upper limit मतलब Q square upon 2 lower limit 0. So now work is equal to Q square upon 2C. ओके, तो इसका मतलब 0 टू Q तक इलेक्ट्रिक चार्ज माइनस प्लेट से प्लस प्लेट तक ट्रांसफर करना है. वर्क डन बाय कैपेसिटर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C. लेकिन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. जो वर्क होगा वो कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा. इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C. द फर्स्ट इक्वेशन एनर्जी स्टोर्ड इन capacitor, energy stored in capacitor. Now C is equal to Q by V. C is equal to Q upon V and therefore Q is equal to C into V. So now substitute C square V square upon 2C. C cancel. So answer is 1 by 2 CV square. So is the second formula. So first formula in terms of Q and C, but second formula in terms of C and V. ओके, नाउ U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C. हमने C सब्स्टिट्यूट किया था, सिमिलरली सॉरी Q सब्स्टिट्यूट किया था, सिमिलरली हम C की वैल्यू रखेंगे Q स्क्वायर अपॉन 2. C इज इक्वल टू Q बाई V. V ऊपर जाएगा सो Q कैंसल. सो 1 बाई 2 Q V इज अ थर्ड फॉर्मूला. सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए टोटल 3 फॉर्मूला मिलेगी. Q square upon 2C in terms of electric charge and capacitance. U is equal to 1 by 2 CV square in terms of potential and capacitance.
and third U is equal to 1 by 2 QV in terms of electric charge and potential. Okay, so now this question in दर्पण is 54 number. इसको कंप्लीट करेंगे. 54 नंबर वाली पूरी क्वेश्चन आपको लिख के कंप्लीट करना है. ओके, नाउ 55 एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की तीन जो फॉर्मूला दी, इससे आपको एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करके देना है. एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट पहले वो कंप्लीट करेंगे. ओके, एनर्जी डेंसिटी रो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी. ओके, एनर्जी की यूनिट जूल, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर. यूनिट प्रेशर की भी हो सकती है तो पास्कल भी लिख सकते हैं. एंड देयरफॉर द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी रो ई इज इक्वल टू m1 l-1 t-2. ओके, इसका मतलब इक्विवेलेंट फिजिकल क्वांटिटी विथ प्रेशर करंट unit energy stored per unit volume is called energy density for electric field is equivalent with pressure, and the dimension formula m1 l-1 t-2. Okay, now energy stored per unit volume is called energy density. So now formula of energy is q square upon 2c, and volume is equal to cross section area or d, cross section area and separation between two plates, it's called d. But q is equal to sigma a. Sigma is a surface charge density. Sigma is a surface charge density. Q is equal to sigma into a. So now rho e is equal to sigma square a square, q square हो गया 2ca into d. So now a cancel, and therefore sigma square a upon 2c into d. But c is equal to epsilon 0 a upon d. C is equal to epsilon 0 a upon d, and therefore rho e, energy density for electric field, is equal to sigma square a upon 2. C is equal to epsilon 0 a upon d into d. Clear? So now rho e is equal to AD cancel, sigma square upon 2 epsilon 0. But electric field between two plate of capacitor, इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव. पॉजिटिव की डायरेक्शन इस तरह होगी और नेगेटिव इस तरह, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. फर्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सेकेंड के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. सो आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. तो ये वैल्यू सब यहाँ ऐड करेंगे. सो रो ई इज इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू sigma equal to E into epsilon 0. So now sigma square is equal to E square epsilon 0 square upon 2 epsilon 0. इसकी स्क्वायर करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो epsilon 0 कैंसल. सो नाउ रो E is equal to 1 by 2 epsilon 0 स्क्वायर, 1 by 2 epsilon 0 स्क्वायर. अब देखो ये फॉर्मूला जो है एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली 4th 5th चैप्टर में एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और दोनों को ऐड करके चैप्टर नंबर 8 एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, कंप्लीट इस तरह से होगा. लेकिन डायरेक्टली पूछा था कि 1 by 2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर की यूनिट, तो प्रेशर की यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. 1 by 2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर की डायमेंशन फॉर्मूला, सो m1 l-1 t-2. सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी. और दर्पण में जो क्वेश्चन लिख के दिया आपको वो है 54 नंबर की क्वेश्चन है. कौन सा? 54 नंबर. ओके, तो ये भी आपको कंप्लीट करना है. 54 आगे पहले हमने कंप्लीट किया, 54 और 55, ये 55 नंबर का है. तो दो क्वेश्चन आपको कंप्लीटली वो लिख के देना है. नाउ 56
आज ये चैप्टर की थियोरी कंप्लीट हो जाएगी। 56 नंबर की क्वेश्चन इस तरह से है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी फॉर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ मैनी कैपेसिटर। ओके, सीरीज और पैरेलल जब कनेक्शन के अंदर आप कॉम्बिनेशन रखेंगे तो टोटल एनर्जी क्या होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन कांस्टेंट, पैरेलल के लगे पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट। ओके, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो चार्ज ऑन इच कैपेसिटर या चार्ज ऑन इच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कैपिटल Q, is capital Q. So now total energy, so Q square upon 2C for series combination. Electric charge on each plate of capacitor is Q. So now U is equal to Q square upon 2C and therefore U is equal to Q square by 2 और यहाँ लिखेंगे 1 upon C. ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्टेंट की फॉर्मूला थी 1 by C इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2, ऐसा लिख सकते हैं। सो ना U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 1 by C1 1 by C2 अप टू 1 by Cn टू 1 by Cn, यहाँ तक हम लिख सकते हैं। ओके, देयरफॉर U इज इक्वल टू सपोज मल्टीप्लिकेशन करें तो Q स्क्वायर अपॉन 2C1 Q स्क्वायर अपॉन 2C2 सिमिलरली Q स्क्वायर अपॉन 2Cn. ओके, एंड देयरफॉर U is equal to the energy of first capacitor because C1, energy for second, energy for third, similarly energy for n number capacitor. ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में रखेंगे हर कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वही टोटल एनर्जी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होगी। ओके, सिमिलरली चलो पार्टीशन करके पैरेलल के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। ओके, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट लेकिन पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। अब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, देखो मैंने ये फॉर्मूला कैसे सिलेक्ट की, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है चार्ज रिमेन कांस्टेंट और कैपेसिटेंस तो कॉमन होता ही है तो Q स्क्वायर अपॉन 2C। लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट लेकिन साथ में कांस्टेंट क्या होगा तो पोटेंशियल। तो इसका मतलब U इज इक्वल टू 1 by 2 CV स्क्वायर वाली फार्मूला हम यूज करेंगे, पोटेंशियल कांस्टेंट और कैपेसिटेंस, एंड देयरफॉर U इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2 रिमेन कांस्टेंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे C, लेकिन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, एंड देयरफॉर U इज इक्वल टू सपोज मल्टीप्लिकेशन के तो 1 by 2 C1 V स्क्वायर 1 by 2 C2 V स्क्वायर and 1 by 2 Cn V स्क्वायर. Okay, and therefore again U is equal to U1 plus U2 plus U3 up to, तो यहाँ भी इसी तरह से है कि total energy stored in both the combination is the sum of the energy stored in each capacitor. फिर से the total energy stored in both the combination series or parallel is the sum of the energy stored in each capacitor. okay, तो यहाँ तक ये थियोरी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस चैप्टर के अंदर। एक ऐसी टॉपिक है कि जो टॉपिक एनसीईआरटी बुक में नहीं दी लेकिन गुजरात गवर्नमेंट की बुक में दी है और सीबीएसई की बुक में भी है। इसका मतलब कॉम्पिटिटिव और दोनों में इस चीज़ काम में आती है। ओके, और वो है वैन द ग्राफ जनरेटर। वो क्या होगा, वैन द ग्राफ जनरेटर। तो जनरेटर कैसे वर्क करता है वो इंफॉर्मेशन, ओके, और इसकी वर्किंग क्या है वो सभी चीज कंप्लीट कर देते हैं। ओके, नाउ वैन द ग्राफ जनरेटर, वैन द ग्राफ जनरेटर ऐसा लिखा है डबल ए। ओके, इस जनरेटर के लिए उन लोगों ने जो प्रिंसिपल प्लस एक्सपेरिमेंट कैसे वर्क करेगा, तो सबसे पहले एक छोटा सा स्फीयर है जिसके रेडियस स्मॉल r, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल q, लेकिन ये जो है
उसके ऊपर कैपिटल Q और उसकी रेडियस कैपिटल R। इसकी रेडियस क्या होगी? कैपिटल R। ओके, सबसे पहले पोटेंशियल की फॉर्मूला, सो V इज इक्वल टू KQ/R। V इज इक्वल टू KQ/R, डिस्टेंस मतलब जो भी लिखना है। तो सबसे पहले हम दो स्फीयर के लिए पोटेंशियल लिखेंगे। फर्स्ट स्फीयर तो कैपिटल R वाला। अब चेक करो, कैपिटल Q से कैपिटल R वाले रेडियस पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/R। क्या लिखेंगे हम? KQ/R। सिमिलरली स्मॉल q से कैपिटल R डिस्टेंस के लिए होगा वो भी KQ/R। पोटेंशियल कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं? सरफेस पे। Q कहाँ है? वो भी सरफेस पे, तो पोटेंशियल KQ/R। लेकिन स्मॉल q, ये स्मॉलर है, इसकी रेडियस के सामने निग्लिजिबल है। ओके, मतलब ये डिस्टेंस इसके सामने निगलेक्ट कर सकते हैं, तो मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्सेंट्रेट एट सेंटर, ऐसा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R हुई, तो स्मॉल q से पोटेंशियल ऑन सरफेस KQ/R। ओके, अब स्मॉल सरफेस के लिए ड्यू टू कैपिटल Q। अब चेक करो, कैपिटल Q इलेक्ट्रिक चार्ज सरफेस पे और हमको जो भी मतलब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। तो मतलब इस स्फीयर के अंदर इस छोटा सा स्फीयर है, तो बड़ा सा जो स्फीयर है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इसको क्या बताया जाएगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर क्या होता है? पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, सो KQ/R। KQ/R। नाउ स्मॉल q से स्मॉल r रेडियस के लिए, तो इसके लिए लिखेंगे KQ/r। तो हमने दो इक्वेशन लिखी, पोटेंशियल ऑन कैपिटल R, पोटेंशियल ऑन स्मॉल r। लेकिन दोनों की कंपैरिजन से पता चलेगा कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज V इंटू स्मॉल r, सॉरी VR, लेकिन स्मॉल r वाला ये हाईएस्ट पोटेंशियल है और ये लोअर। क्यों? तो ये दोनों टर्म इक्वल है, ऊपर वाली पोर्शन भी इक्वल है, लेकिन ये कैपिटल R रेडियस और ये स्मॉल r रेडियस, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो रेशियो कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब रेशियो क्या मिलेगा? ज़्यादा। सो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज VR माइनस VR। इससे इसको माइनस करना है, क्या लिखेंगे? KQ/R, KQ/r माइनस KQ/R एंड माइनस KQ/ स्मॉल q कैपिटल R। सो एक टर्म कैंसल एंड देयरफॉर VR माइनस VR इज इक्वल टू KQ कॉमन 1/R माइनस 1/R। इस फॉर्मूला से पता चलता है कि सपोज आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो KQ R माइनस स्मॉल R इंटू, सो इससे इसको माइनस करेंगे और ये क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है और इसकी पोटेंशियल कम। इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से यहाँ तक स्टोर करना शुरू करेंगे तो दोनों स्फीयर के बीच में बड़ा से बड़ा मतलब हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वाला पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। इज अ प्रिंसिपल ऑफ द वैन डे ग्राफ जनरेटर, प्रिंसिपल ऑफ वैन डे ग्राफ जनरेटर। फिर भी ये इंफॉर्मेशन नीट और JEE करके दर्पण में तो लिख के दिया है। ओके, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ये प्रिंसिपल लिख के दिया है। प्रिंसिपल है कि जिससे कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक चार्ज इसको किसी भी तरह यहाँ शिफ्ट किया जाए तो ये बड़े स्फीयर के बीच और ये छोटे स्फीयर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा मतलब चार्ज स्टोर कर सकता है। ओके, अब इसकी यूज़ क्या है? इससे जो जनरेटर प्रैक्टिकली बनाया गया वो हाईएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। हाईएस्ट मतलब कितना? तो 6 to 8 मिलियन वोल्ट, 6 to 8 मिलियन वोल्ट, 6 to 8 मिलियन वोल्ट। मिलियन मतलब 10 lakhs, मतलब 6 इंटू 10⁻⁶ से लेके 8 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। 60 lakhs to 80 lakhs वोल्ट का डिफरेंस इससे क्रिएट होता है। वो कैसे? तो सपोज ये सबसे बड़ा स्फीयर, इसके अंदर एक छोटा सा स्फीयर, यहां एक इंसुलेटेड बेल्ट होता है, ओके। नीचे जो स्फीयर है उसके साथ एक ब्रश रहता है। ब्रश मतलब ऐसे कांटेक्ट में एक प्लेट होती है, जैसे जैसे रोटेट होगा
जैसे जैसे बेल्ट रोटेट, सपोज ऊपर की ओर गया तो नीचे गया, जैसे रोटेट होगा तो फ्रिक्शन के हिसाब से इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होंगे और वो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से ऊपर तक जाएगा, ऊपर वाले स्फीयर तक जाएगा। जैसे ऊपर वाले स्फीयर पे जाता है तो यहाँ से एक और ब्रश सपोज कनेक्ट कर देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर के ऊपर आएंगे। ओके, ये पोर्शन बाद में इंसुलेटेड हो जाता है, पूरा ऐसे बॉक्स करके कंप्लीट किया जाता है। ओके, इससे से पूरा इसको बंद कर दिया जाएगा, मतलब ये रोटेट होगा, फ्रिक्शन से चार्ज क्रिएट होंगे, चार्ज यहाँ से ऊपर जाएंगे, वो चार्ज इस कनेक्शन से ऊपर तक जाके बड़े स्फीयर के ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो 6 to 8 मिलियन वोल्ट का होगा। और इसका यूज क्या है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। हाई एक्सेलरेशन से जो भी चार्ज पार्टिकल मोशन करते हैं बहुत सारी जगह पे इसका यूज है। एक तो डिफरेंट, मतलब कि आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर, इसमें सिंक्रोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन, LHC ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं, यहाँ भी एक्सेलरेट होते हैं। इसकी यूज़ क्या है, तो रेडियो एक्टिव, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्रिएट करने के लिए। सेकेंड चीज़ है कीमोथेरापी, कैंसर की कीमोथेरापी, इसमें भी यूज़ होता है। और किसी भी एटम के अंदर आपको आयन इम्प्लीमेंटेशन करना है, मतलब पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन जैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चार्ज पार्टिकल इससे एक्सेलरेट होता है क्योंकि जितनी पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा इतने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होंगे। तो आज वर्क जो है वो टोटल 3 क्वेश्चन है, 54, 55 एंड 56। लेकिन मान लीजिए कि आप जनरेटर पढ़ना है और इस तरह से चैप्टर नंबर 2 की आज सभी थियोरी कंप्लीट हो जाती है। क्लियर, सभी थियोरी चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट हो जाएगी। ओके, और चैप्टर नंबर 2 की अब न्यूमेरिकल जो है कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। क्लियर? To obtain an expression for the energy stored in a capacitor, let us consider a parallel plate capacitor having metal plates X and Y, each of area A and separated by a distance D. When the plates X and Y of the capacitor are connected to a battery, one of the plates is given an excess charge plus Q and the other is given a charge minus Q. The plates X and Y are connected to the positive and the negative terminals of the battery respectively. Let the capacitance of the capacitor be C, which is a constant. Let us now try to understand the mechanism involved in the process of charging of the capacitor plates from an energy point of view. In order to do that, we need to first imagine that the plates of the capacitor are completely uncharged. Now imagine removing infinitesimally small positive charge plus dq dash from the plate Y and transferring it to the other plate repeatedly. In this process, we see that the plate Y is getting negatively charged due to the buildup of excess negative charge on it, and hence the plate Y is at a lower potential. Simultaneously, we see that the plate X is getting positively charged due to the buildup of excess positive charge on it, and hence the plate X is at a higher potential. Therefore, the process involves transferring charge from the plate Y at the lower potential to the plate X at the higher potential. The electric field that builds up between the plates has a direction that tends to oppose further charge transfer. In other words, we can say that there exists a force that repels the transfer of charge plus dq dash repeatedly to plate X. Therefore, as charge accumulates on plate X, this repulsive force on the charges being transferred increases, and hence the amount of work done to transfer charge also increases. This work is actually done by the battery at the expense of its stored chemical energy. The work done to charge a capacitor is stored as electrostatic potential energy, U, in the capacitor. Now,
let us consider a state of the capacitor where the charge on the plates of the capacitor is Q dash and the potential difference between the plates of the capacitor is V dash. Then, Q dash is equal to CV dash or V dash is equal to Q dash by C. Let this be equation 1. Now let us transfer the next additional charge plus dQ dash to the plate X of the capacitor from the plate Y and let the work done in the process be dW. From the definition of potential difference, we know that V is equal to dW by dQ. Therefore, dW equal to V dash dQ dash. Let this be equation 2. Substituting equation 1 in 2, we get dW is equal to Q dash by C into dQ dash. Let this be equation 3. Now, let us calculate the total work done W to charge the capacitor from 0 to a total charge plus Q. We know that W is equal to integral dW in the limits 0 to plus Q. Substituting the value of dW from equation 3 in the above expression and simplifying further, we get W is equal to Q square by 2C. This work done, W, is stored as electrostatic potential energy in the capacitor. Electrostatic potential energy of the capacitor is denoted by U. Hence, we get U is equal to Q square by 2C. Using Q equal to CV, we also see that energy stored U is equal to Q square by 2C is also equal to half CV square. Now, since Q is equal to CV, U is equal to half QV. A charged capacitor is analogous to a stretched spring. When the spring is stretched, it stores elastic potential energy U equal to half kx square, where k is the force constant of the spring and x is the elongation in the spring. When released, the spring loses the stored elastic potential energy. Similarly, the capacitor when charged stores electrostatic potential energy U equal to Q square by 2C. We see that the value of Q is analogous to the elongation x, and the value of 1 by C is analogous to the value of the force constant K. The energy supplied to the capacitor in the charging process is released when the capacitor discharges. We can also say that the energy stored in the capacitor is localized in the electric field between the plates. Now let us derive an expression to calculate the energy density of the region between the plates of the capacitor. The electric field strength E between the plates of the capacitor is equal to V by D, assuming a uniform electric field between the plates. Let this be equation 4. The electric field fills the region between the plates, and this region has a volume equal to area A into distance D. The energy density is defined as energy stored per unit volume. Therefore, energy density is equal to the energy stored by volume. This is equal to half CV square divided by AD, since the volume is equal to AD, which is equal to CV square by 2AD.
Multiplying and dividing the right-hand side of this expression with D, we get energy density is equal to half CD into V square by AD square. Let this be equation 5. For a parallel plate capacitor, we know that the capacitance C is equal to epsilon naught A by D. Therefore, CD by A is equal to epsilon naught. Let this be equation 6. Substituting equations 6 and 4 in equation 5 and simplifying, we get energy density is equal to half epsilon naught into E square. This equation for energy density holds good for the electric field of any charge configuration in general. A Van der Graaff generator is a device that is used to build up very high voltages of a few million volts. This high voltage can build very strong electric fields, which can accelerate charged particles to very high speeds and high energy levels. Generally, this apparatus is required when conducting experiments involving the study of subatomic particles. To understand the principle behind the working of a Van der Graaff generator, let us consider a large conducting shell of radius R1 with a charge plus Q1 on it. This charge is uniformly spread over the conducting shell. For such a charged conducting shell, we know that the electric field strength inside the shell is 0. And the electric potential V inside the spherical shell has the same value at all points inside the shell, and V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1. Let this be equation 1. We also know that the electric potential at the surface of the spherical shell is equal to the potential inside the shell. Let us assume that there is another smaller concentric sphere of radius R2 with a charge Q2 on it. Now let us consider the potentials at the surfaces of the inner and the outer spheres. Let the potential at any point A on the surface of the inner sphere be VR2. This potential is due to the charge on both the spheres. Then VR2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R2. Here, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1 is the potential due to the charge on the outer sphere. And 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R2 is the potential due to the charge on the inner sphere. The potential at any point B on the surface of the outer sphere is VR1. This potential is due to the charge on both the outer sphere as well as the charge on the inner sphere. Hence, V of R1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R1. Here, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1 is the potential due to the charge on the outer sphere. And 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R1 is the potential due to the charge on the inner sphere. The potential difference between the inner and outer spheres is delta V equal to VR2 minus VR1. Substituting the values of VR2 and VR1 in the expression for delta V and simplifying,
we get delta V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q2 into 1 by R2 minus 1 by R1. We see that the potential difference delta V depends on value of Q2. Since Q2 is positive, the value of delta V is also positive. This clearly implies that the potential at the inner sphere is greater than the potential at the outer sphere. From the expression for delta V, we also see that the potential difference between the inner and outer spheres is independent of the charge Q1 given to the outer sphere. If we now connect the inner sphere to the outer sphere, charge flows from the inner sphere to the outer sphere, since the inner sphere is at a greater potential as compared to the outer sphere. Therefore, we can keep on adding charge to the outer sphere by supplying charge to the inner sphere as it flows from the inner sphere to the outer sphere. Therefore, the potential at the outer sphere keeps on rising until it reaches the breakdown field strength of air, when it starts leaking off to the air. Due to the small charged sphere, which is within the large sphere, we can keep piling up larger and larger amount of charge on the latter. This is the principle of the Van der Graaff generator. The schematic diagram of the Van der Graaff generator is as shown. It consists of a hollow metallic conductor A, which is mounted on an insulating column. A pulley B is mounted at the center of the sphere A. Another pulley C is mounted near the base of the conductor. And C can be continuously driven by an electric motor or by hand in case of the device being used for demonstration. A belt of insulating material, such as silk or rubber, passes over the pulleys. As the pulleys move continuously, the belt also moves continuously. Two comb-shaped conductors, X and Y, having metallic needles, are mounted near each of the pulleys, pointing towards the belt. The lower comb X is maintained at positive potential of about 10 power 4 volt by a power supply system. The upper comb Y is connected to the metallic sphere A. Because of the high electric field near the needles of the comb X, there is corona discharge, and the air near it starts conducting. The negative charges in the air move towards the positively charged needles because of attraction. The positive charges in the air move towards the belt due to repulsion and stick to the belt. The negative charges neutralize some of the positive charges on the comb X. The power supply keeps supplying more positive charge to the comb X, and effectively, the positive charge is transferred from the power supply to the belt. As the belt moves, this positive charge on the belt is carried up, and when it reaches near the upper comb Y, corona discharge occurs again, and the air starts conducting. The negative charges in the air moves towards the belt, and the positive charges in the air move towards the needles of the comb Y. The negative charges neutralize the positive charges on the belt. The positive charges in the air, which have moved to the comb, are effectively transferred to the sphere A. Effectively, the positive charge on the belt is transferred to the sphere, and in a very short duration of time, the positive charge on the sphere moves to the outer surface and spreads uniformly. Thus, the device continuously transfers positive charge to the sphere A, and hence, its potential keeps on increasing. The potential builds up till the corresponding electric field reaches close to the breakdown field of air, which is of the order of 3 × 10⁻⁶ volt per meter.
The limiting factor on the value of the potential of the sphere is the radius of the sphere. When the electric field outside the sphere A is just sufficient for dielectric breakdown of surrounding air, no more charge can be transferred to the sphere A. A sphere of radius r equal to 1 meter can be raised to a potential of 3 × 10⁶ volt by this method. The potential can be further increased by placing the sphere in a highly evacuated chamber, in which case there will not be any air surrounding the sphere.